Hello, Namaskar and good afternoon. Welcome to NCRT's live interactive session. This is your host Simran Singh. You all are watching us on PMeVIDYA channel number 6 and 11, or you might also connect with us through our YouTube channel that you all are well aware of. It is NCERT official. A very warm welcome to all our viewers and our esteemed panelists in this particular session of MANODARPAN Paricharcha, a series on mental well-being and to provide psychosocial support to the students during COVID-19 and beyond. Well, MANODARPAN Paricharcha is a special initiative by the Ministry of Education. So viewers, in case if you want to explore more about it, here is our website flashing on your screen. It is www.manodarpan.mhrd.gov.in. Apart from that, we also have our national helpline number. So in case if you face any of those issues, if you are confronting any of the challenges, then feel free to contact us at this number that is there on your screens. It is 844-844-0632. Then we also have our live session running on our Facebook or Meta page, that is National Council of Educational Research and Training, NCERT. Once again, a very warm welcome in MANODARPAN Paricharcha. Here we discuss about some of the most important topics, and today we are going to discuss about substance abuse, identification and prevention in schools. I know this is a significant topic because schools, they have the maximum reach to adolescents, youngsters and the students. At the same time, they bear this important responsibility of educating their students and making them aware about the need to have a healthy lifestyle. And throwing more light on these aspects, we are joined by esteemed panelists in this conversation. So allow me to introduce our first panelist for this session. We are joined by Dr. Daksha Parmar. Namaskar, ma'am. A very warm welcome in the session. Ma'am is Assistant Professor from RIE Bhopal. Then we also have in this conversation Dr. Nidhi Sahu. Namaskar, ma'am. Namaskar. A very warm welcome in the session as well. Good afternoon. Ma'am is Consultant Psychologist from Bhopal. The third panelist for the evening remains Dr. Reena Singh Rajput. Namaskar, ma'am. Namaskar. वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका. मैम इज कंसल्टेंट काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर. Besides, she is currently serving as Associate Professor at Faculty of Liberal Arts and Humanities, Jagran Lake City University, has joined in from Bhopal. A very warm welcome. The fourth panelist in the evening remains Dr. Avni Parashar. Namaskar, ma'am. Namaskar. Thank you. A very warm welcome. Ma'am is PGT in Guidance and Counseling, DMS, joined in from RIE Bhopal. Then our fifth and the last panelist for the session remains Dr. Sonal Sharma. Namaskar, ma'am. A very warm welcome. Ma'am is currently serving as Assistant Professor at RIE Bhopal. A very warm welcome to all our viewers and the panelists who have joined with us in this particular session of MANODARPAN Paricharcha, where we are going to discuss about this significant issue, that is substance abuse, identification and prevention in schools. Now, to enlighten us more about this, we have with us our first panelist who will be talking about identification of substance use in students. So, Dr. Reena Singh Rajput, I would like to invite you for this conversation. Let's begin. Thank you. Thanks a lot, ma'am, for inviting me and helping me out to enlighten the students, teachers, as well as all the viewers who are present here. And looking forward that I'll be of great support to them at some level. Sure. So, so my topic when I talk about is identification of substance use in students. कई बार दिमाग में ऐसा आता है कि ऐसी कौन सी चीज हमें पता चल जाए जिससे ये हो जाए कि ये बच्चे को मेरे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, किसी गलत संगत में आ गया है या किसी तरह का सब्सटेंस यूज कर रहा है. तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है that like they are two friends and when they are together, all of a sudden the friend shares कि I'm having a lot of stress, I'm not able to cope up with those things. So the other friend says, अरे चिल यार, एक सिगरेट ले ले, मजा आ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी. The start comes from there and वहाँ पर सिगरेट का एक कश लिया जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, माइंड becomes cool. तो उसको लगता है कि वाओ,
इससे तो बहुत सारा सेटिस्फैक्शन मिल गया मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो द स्टूडेंट और द चाइल्ड और द इंडिविजुअल ट्राइज टू एसोसिएट हिमसेल्फ और हरसेल्फ विथ the other aspect ki wow, if I smoke I can get lot of satisfaction. और उसी तरह से हम स्मोकिंग की बात कर लें या डार्क चॉकलेट्स की बात कर ले, वो वही सब्स्टिट्यूशन है। तो इनिशियली तो सारी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी रहती है, पर धीरे धीरे ये चीज ऑब्जर्व की जाती है कि एक टाइम के बाद वो जो नीड है वो इंक्रीज हो जाती है। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और, एक सिगरेट से कुछ नहीं हो रहा है, दूसरी भी ले लेते हैं, तीसरी भी ले लेते हैं, चॉकलेट के बड़े बड़े बार खा लेते हैं लोग, अलग अलग तरीके के एडिक्शन में फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। और वो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी ना रहते हुए फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी पर आ जाती है। तो नेचुरली जब हम सब्सटेंस अब्यूज की भी बात करते हैं तो वो इट इज लाइक परसिस्टेंट यूज ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस हो, जब हम उसको कंसिस्टेंटली यूज करते हैं फॉर एटलीस्ट 1 मंथ, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये सब्सटेंस अब्यूज हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स इट कंट्रीब्यूट्स टू योर सोशल, ऑक्यूपेशनल एज वेल एज फिजिकल प्रॉब्लम्स. So problems can be anything, but then the options which you choose consistently for around a month's time, that leads you towards substance abuse. So let's try to divide this substance abuse, that how we are going to identify students with substance abuse. So if we could divide it into physical, psychological and social. These areas will help us out to check it over that how we are able to identify our students. कैसे पहचानेंगे उसके फिजिकल अपीयरेंस से, हम कैसे पहचान लेंगे उसकी मनोदशा से, हम कैसे पहचानेंगे, या हम उसका सामाजिक उसका संप्रेषण, उसका मेलजोल किस तरह से है, कैसे पहचानेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट है या कोई इंडिविजुअल है वो सब्सटेंस अब्यूज में एक पार्ट है। थोड़ी सी चीजें जब हम देखते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि हम लंबे समय से जानते आते हैं, भले वो हमारी क्लास में ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रेमाइसेस में रहता है, तो ध्यान तो रहता ही है, और एक टीचर का ध्यान हर बच्चे पर रहता है। तो ये अगर ऑब्जर्व किया जाए कि उसका कंसिस्टेंट वेट लॉस हो रहा है, लगातार उसका वजन कम हो रहा है, तो ये सोचने वाली बात है, ये जानकारी लेने वाली बात है कि कहीं बच्चे को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। क्या उसे परेशानी है, क्या उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या वो उसकी संगति है जिसके कारण वो उसको प्रॉब्लम हो रही है। आप उसका देखेंगे कि बालों का झड़ना बढ़ जाता है, चेहरे का जो त्वचा है, जो हम कहते हैं कि बचपन है, अडोलेसेंट है, लाइक किशोर वय है, देयर शुड बी अ ग्लो ऑन फेस। तो वो ग्लो कहीं ना कहीं एक मुरझा सा जाता है उसका चेहरा। और जब वो बच्चा लिखने बैठता है तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो कहीं ना कहीं उसके हाथ कपकपा रहे हैं, उसके पैरों में कांस्टेंट ट्रेमलिंग चलती रहती है। तो ये कुछ छोटी सी चीजें हैं। जब आप उससे बात करेंगे तो उसके आंखों की जो चमक होती है वो भी काफी कम सी होती है। लाइफलेस आईज आर देयर विच वी कैन ऑब्जर्व ऑफ द पीपल और द स्टूडेंट्स हु आर इंडल्ज्ड इनटू सब्सटेंस अब्यूज। देन इंसोम्निया और एक्सेसिव स्लीप, दोनों एक्सट्रीम हो सकती है। या तो बच्चे को नींद ही नहीं आएगी बिल्कुल भी, या वो बहुत ज्यादा सोएगा, जितनी बार उठाओ, हाँ बस अभी 5 मिनट में उठ रहा हूँ, बस अभी 5 मिनट में उठ रहा हूँ। अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, न्यूट्रिशन वाइज भी आप अपनी तरफ से, अगर पेरेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन होता है उससे पता चलता है कि न्यूट्रिशन वाइज भी वो सारी चीजें बराबर मिल रही हैं, पर फिर भी ऐसा देखा गया कि वो बहुत सोता है। क्लास में भी आप देखेंगे कि हर थोड़ी देर बाद अपना हेड डाउन करके बच्चा बैठा हुआ है। उसको कहीं ना कहीं ये इंडिकेशंस भी हमें बताते हैं कि कहीं बच्चा किसी परेशानी में है या सब्सटेंस अब्यूज का शिकार कहीं ना कहीं हो रहा है।
और बहुत प्रोमिनेंटली हाथों पर नीडल्स के मार्क होते हैं। यूजुअली ये जो लेते हैं ड्रग्स बच्चे, या तो नीडल से हाथ पर लेते हैं या फिर बटक्स पर लेते हैं, क्योंकि बटक्स पर लेना भी आसान होता है उनके लिए, तो वो वहां पर लेते हैं। तो ये बटक्स पर तो हम बहुत इजीली नहीं देख पाते हैं। ये पेरेंट्स हैं, जब वो बच्चा कपड़े वगैरह चेंज करता है या बाय चांस हमको दिख गए कुछ ब्लड के स्टेन्स और उससे हमने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करी, तो पॉसिबिलिटीज हैं कि हमें पता चल जाएगा। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल रहता है, पर हाथ के निशान जरूर दिख जाते हैं जिससे हम देख सकते हैं। अगर हम उनका मनोवैज्ञानिक पर्सपेक्टिव देखें तो आप देखेंगे ये बच्चे जो है थोड़ी सी तेज आवाज में बात करते हैं और लड़खड़ाते हैं, उनकी आवाज जो है वो लड़खड़ाती है जब वो बात करते हैं, और छोटी छोटी चीजों पर बहुत तेज गुस्सा आना शुरू हो जाता है। और जब ध्यान लगाने की बात आती है, ध्यान से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो मेडिटेट कर रहे हैं किसी चीज पर, नहीं, पर पढ़ाई में ध्यान की बात कर ले या किसी भी काम के लिए हमने छोटा सा कहा है, उसमें भी बच्चा जो है वो अनमना सा हो जाता है, थोड़ी चीज सुनता है, आधी चीज नहीं करता है, कहीं और ही दुनिया में उसका गुम सा रहता है। अगर इस तरह की चीजें दिख रही हैं, छोटी छोटी चीजों पे चिड़चिड़ापन अगर हम देख रहे हैं, हम चाह रहे कि नहीं बच्चा तुम कर सकते हो, हम मोटिवेट कर रहे हैं, पर उसकी तरफ से वो जो मोटिवेशन लेवल है वो काफी लो महसूस हो रहा है। ऐसे समय पर अगर ये सारी हमें सिम्टम्स भी दिखते हैं तो हमें आगे उसके बारे में जानकारी जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये भी आपको देखने लायक चीज है कि ऐसे समय में बच्चा अपने आप को कोशिश करेगा जितना हो सके अकेला रहे, जहां पर परिवार वाले सारे मिलकर रह रहे हो, सारे दोस्त स्कूल में मस्ती कर रहे हो, ये बच्चा कोशिश करेगा कि अपने आप को अलग रखने की, और उसका जो गुस्सा है या छोटी सी चीज जो होती है जिसे हम कहते हैं कि छोटी छोटी बातों पर वो एकदम रिएक्ट कर जाता है, जबकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि छोटी सी बात कही है उस पर वो रिस्पॉन्ड करेगा, पर वो उसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, और वो कोशिश करता है कि अगर जिस चीजों में वो इन्वॉल्व है, धीरे धीरे अपने दोस्तों को भी उसका एक पार्ट बना ले, उनको भी इन्फ्लुएंस कर ले, और साथ में इन सारी चीजों को कर ले। और जहां भी बड़ी गैदरिंग्स होती हैं, एनुअल फंक्शन है, स्पोर्ट्स है, एग्जीबिशंस हैं, वो कोशिश करता है कि इस तरह की सोशल गैदरिंग में उसको पार्टिसिपेट ही ना करना पड़े। पर ये सारी चीजें, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम, अगर हम फिजिकल लेवल पर सिम्टम्स देखते हैं, अगर हम साइकोलॉजिकल लेवल पर देखते हैं, या हम सोशल लेवल पर देखते हैं, हमें चिंता बिल्कुल नहीं करनी है इस चीज की। आप देख लीजिए, आप बच्चे से बात करने की कोशिश करिए, और बहुत घबराने की और रिएक्ट करने की जरूरत नहीं कि अरे तुम ये क्या करने लग गए हो, इस तरह से ना करते हुए कोशिश करें कि एक एक्सपर्ट से मिले और वो आपकी चीजों का समाधान जरूर करेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। Well, I think we must conclude her statements. Ma'am, you rightly mentioned about taking substance abuse, about the pressure and the need to look trendy and to fit in the circle. Well, that is a problem that most of the adolescents face out there. Apart from that, you also mentioned rightly about the physical characteristics or the symptoms that the teachers in the schools or the supporters, they could identify why a person or a student could is behaving in so and so situation. Apart from that, the lack of concentration also, it hugely and at a very big scale, it affects the academic perspective and the marks, and then also the academic knowledge of a student. And the best part was talking the things out. It's important to talk through these things, and it is very important to provide students with the flexible environment, so that they can talk to their teachers about the problems, about the circumstances that they are in. Thank you so much. We'll surely get back with some of the questions, but let's continue our discussion for now. The next panelist, I would like to invite Dr. Nidhi. A very warm welcome, ma'am. Ma'am, I would request you to please start your conversation regarding predisposing factors in substance use. Thank you, Simran. Thank you, Reena ma'am.
आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन बच्चों को जो कि ऑलरेडी इसमें एंटर कर चुके हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि उन रिस्क फैक्टर्स को जानना कि वाई सम चिल्ड्रन आर वेरी मच एट द हायर रिस्क ऑफ यूजिंग सब्सटेंस, क्योंकि सब्सटेंस यूज करना, सब्सटेंस को एब्यूज करना एंड देन टू बिकम एडिक्टेड, ये 3 रेंज है। तो जब कोई बच्चा इनिशिएट करता है, इनिशिएट करने के साथ साथ ही वो एडिक्टेड नहीं हो जाता है, और ये जो गैप होता है इवेंचुअली द चाइल्ड बिकम्स हैबिचुअल ऑफ इट। तो इसी को हम, इन्हीं रिस्क फैक्टर्स को हम प्रिवेंटिव फैक्टर्स की तरह यूज कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि एक बच्चा सब्सटेंस एब्यूज को ट्राई करता है, सब्सटेंसेस को ट्राई करता है और छोड़ देता है। कुछ ओकेजनली यूज करते हैं, कुछ रेगुलरली यूज करते हैं, पर उस पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। एंड देयर आर सम who become addicted to it and then become dysfunctional, उनकी फंक्शनैलिटी ही हैम्पर्ड हो जाती है। तो ऐसे कौन से प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जो उनको एक हायर रिस्क पर रखते हैं? सबसे, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसा आपने भी कहा है, होम है, होम में मतलब फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, देन स्कूल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली हम स्कूल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। इसके अलावा पीयर्स हैं, देन एनवायरनमेंट है। ये चारों ही एजेंसीज बच्चे के साथ कांस्टेंट इंटरप्ले में रहती हैं। तो ये चारों एजेंसीज में कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स निकल कर आते हैं? सबसे पहले हम बात करें तो केओटिक फैमिली एनवायरनमेंट। केओटिक फैमिली एनवायरनमेंट में सबसे पहली चीज आती है कि यदि कोई भी एक पेरेंट किसी भी मेंटल इलनेस या टर्मिनल इलनेस से सफर कर रहा है, या फिर कोई भी पेरेंट, एनी ऑफ द पेरेंट इज यूजिंग सब्सटेंस, अगर वो सब्सटेंस यूज कर रहा है, तो वहां पर बच्चे के लिए ये एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। सेकेंड डिफिकल्ट सिचुएशन को यदि हम देखें तो वो है लैक ऑफ बॉन्ड, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जब हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात करते हैं तो ये एक पेरेंट और चाइल्ड के बीच में एक जो नर्चरिंग, जो एक अटैचमेंट होता है, जिसमें कि नर्चरिंग स्टाइल होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ भी पेरेंट या चाइल्ड या चाइल्ड और सिबलिंग के बीच में वीक बॉन्ड होते हैं, वीक कनेक्शंस होते हैं, तो वो सिचुएशन बच्चे को रिस्क पर रखती है। Then there is a lack of clear rules in the family, consistent rule की कमी होती है। तो रूल ऑफ कंडक्ट क्या होनी चाहिए, मीन्स जहाँ पर की बाउंड्रीज हेल्दी नहीं रहती है, जहाँ पर की बाउंड्रीज डिफ्यूज हो जाती हैं, जहाँ पर की बाउंड्रीज ब्लड होती हैं, वीक होती है, वहाँ पर भी पेरेंट के साथ बच्चे का जो कम्युनिकेशन चैनल होता है वो हैम्पर्ड होता है। देन इनइफेक्टिव पेरेंटिंग, इनइफेक्टिव पेरेंटिंग या इम्पेयर्ड पेरेंटिंग की हम जब बात करें तो वो डेफिनेटली जहाँ पर कि बच्चे किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, कोई मूड स्विंग्स होते हैं, या इम्पल्सिविटी होती है, या एग्रेशन होता है, या कंडक्ट डिसऑर्डर होता है, या एडीएचडी होता है, और वहाँ पर पेरेंट्स यदि अपने बच्चों को समझ नहीं पाते हैं और एक सपोर्ट नहीं दे पाते हैं, तो वहाँ पर भी बच्चे हायर रिस्क पर होते हैं। So family plays a very important role. Let's see that how this the family is affecting, yeah, family is putting children at higher risk. In the next slide. Okay, so sometimes genetic disposition also play a very important role. जिन फैमिलीज में ऑलरेडी ये पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या एनी सिबलिंग इज यूजिंग सब्सटेंस, जहाँ पर कि अल्कोहल हो सकता है, किसी तरह का ड्रग हो सकता है, वहाँ पर भी उनके ब्रेन में अल्ट्रेशन हो सकता है। और रिसर्च सपोर्ट करती है इस फाइंडिंग को कि उन बच्चों में जिनमें की जेनेटिक डिस्पोजिशन होता है, दे आर एट अ हायर रिस्क। इट डज नॉट मीन कि दे विल टेक इट, लेकिन वो बच्चे हायर रिस्क पर होते हैं। इम्पेयर्ड पेरेंटिंग स्टाइल is again a very important factor, जहाँ पर कि हम ऑथोरिटेरियन और नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल रिस्पॉन्सिबल होता है, और वहाँ बच्चे को इनकंसिस्टेंट डिसिप्लिन का एनवायरनमेंट होता है, लेस पेरेंटल वार्मथ होती है, एंड देयर इज नो क्लियर कट
ways to resolve the conflict between a parent and a child. तो जहाँ पर कि इस तरह की कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में जो पेरेंट्स और बच्चे रहते हैं, वहाँ पर भी बच्चे हाई रिस्क पर होते हैं। देन फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, जैसा कि रीना मैडम ने भी कहा था कि बहुत सारे ऐसे फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां हम बच्चों को ऑब्जर्व कर सकते हैं और बच्चों को चेक कर सकते हैं, और उन्हीं रिस्क फैक्टर्स को हम विद द राइट इंटरवेंशन वी कैन पुट इट इन द प्रोटेक्टिव, हम उन्हीं प्रोटेक्टिव फैक्टर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं कि लाइक इफ द चाइल्ड इज आस्किंग फॉर मनी, या बराबर बच्चे की मनी की डिमांड बढ़ती जा रही है, या बच्चा अपने आप को सोशली विड्रॉ कर रहा है, या फिर बच्चा कांस्टेंट जो है अपने आप को अपने रूम में एंटर नहीं करने देना चाहता है अपने पेरेंट्स को, या अपने सिबलिंग्स को एंटर नहीं करने देना चाहता है, वो कहाँ जा रहा है ये अपने पेरेंट्स को नहीं बताना चाहता है, अपने फ्रेंड्स को जो है वो सीक्रेटिव रखना चाहता है, अपने सारे प्लान्स को विजिट जो भी बाहर विजिट होती है उनको सीक्रेटिव रखना चाहता है। तो ये सारे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली पुअर पेरेंटल मॉनिटरिंग एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे विजिबल साइंस हो सकते हैं जहाँ पर कि पेरेंट इंटरवीन कर सकते हैं, और इंटरवीन करने के बाद दे कैन पुट द चाइल्ड ऑन चेक कि क्या उनका बच्चा किसी भी तरह के सब्सटेंस यूज या अब्यूज में नहीं है। तो लैक ऑफ फैमिली इन्वॉल्वमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स हमने ये भी देखा है कि फैमिली रिजेक्शन ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी एडोलेसेंट एज में, जबकि बच्चा जो अर्ली एडोलेसेंस या मिडिल एडोलेसेंस स्टेज पे होता है, वहां पर की सेक्सुअल ओरिएंटेशन जेंडर आइडेंटिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बच्चा अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, और वहां पर जब कोई भी डिसओरिएंटेशन या कहीं पर भी बच्चा कंफ्यूज होता है, या बच्चे को प्रॉपर सपोर्ट गाइडेंस डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, या बच्चे को अप्रूवल नहीं मिलता है, बच्चे को रिजेक्शन को फेस करना पड़ता है, तो वहां पर बच्चा जो है उस फीलिंग को से कोप अप करने के लिए वो डायरेक्ट हो सकता है, बिकॉज दिस इज अ इजी कोपिंग। जैसा कि आपने रीना मैडम ने भी कहा था कि पहले स्टार्ट होता है कि किसी प्लेजरेबल एक्टिविटी से आप इन्वॉल्व होते हैं कि आपको थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, थोड़ा आपको आप उस चीजों से बाहर आते हो, बट देन इट बिकम्स अ वेरी इजी कोपिंग मैकेनिज्म। सो पुअर पेरेंटल मॉनिटरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, जहां पर कि हम प्रिवेंटिव रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करके और बच्चे को हम रोक सकते हैं। इन्हीं पुअर पेरेंटल मॉनिटरिंग एक फैक्टर ये भी आता है कि अगर बच्चा फ्रीक्वेंटली स्कूल या कॉलेजेस को मिस कर रहा है, और बच्चे में सडन डिसइंटरेस्ट हो गया है स्कूल एक्टिविटीज में, बच्चे का जो है ग्रेड्स ड्रॉप हो रहे हैं, बच्चे का स्कूल परफॉर्मेंस वर्क परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रहा है, या बच्चे का खुद का फिजिकल अपीयरेंस के प्रति बहुत ही नेग्लेक्टेड एटीट्यूड है, बच्चे की ग्रूमिंग, बच्चे का अपने आप को अपडेटेड रखना या अपने आप को अप टू डेट रखना, ये सारी चीजें जो है वो उनमें धीरे धीरे कमी आती जा रही है। तो ये एरिया है जहां पर कि पेरेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए। पेरेंट केयरफुल होना चाहिए, बट इट डज नॉट मीन दैट पेरेंट्स हैव टू बी वेरी लाइक ओवर कॉशियस या ओवर अलर्ट नहीं होने चाहिए। तो पुअर पेरेंटल मॉनिटरिंग इज अ वेरी वेरी important area where parents can play a very important role. अगर हम इसी में आगे देखें, फैमिली को ही यदि हम आगे देखें, तो फैमिली में अगर एक जैसा कि कई बार हमने देखा है कि एक बच्चे के साथ कंडक्ट डिसऑर्डर होता है, या बच्चे के अंदर बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, या बच्चा ADHD होता है, तो उनको आइडेंटिफाई करके बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ एडिक्शन एक डेफिनेटली जेनेटिक डिस्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जहां पर कि बच्चे के कोई भी पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट या सिबलिंग अगर यूज कर रहे हैं, या जो पेरेंट यूज कर रहे हैं उसमें कहीं ना किसी तरह का वायलेंस है, एब्यूजिंग है, तो वहां पर बच्चा जो है वो हायर रिस्क पे रहता है।
ऐसा भी कहा जाता है कि अर्ली यूज मतलब कि अगर हम देखें कि जो मेजर ट्रांजिशन फेज होती है उसमें अगर बच्चे का अर्ली एक्सपोजर होता है तो, या जैसे फैमिली में अगर अल्कोहल का यूज है, और कई पेरेंट्स ये मान के चलते हैं कि अगर साथ में बच्चे को कंट्रोल कंजप्शन के लिए बच्चे को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, तो चाइल्ड शुड बी अलाउड टू टेक इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। लेकिन दिस अर्ली एक्सपोजर कैन बी वेरी हार्मफुल, कैन पुट अ चाइल्ड, क्योंकि ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि इट स्टार्ट्स विथ वन थिंग, ये एक चीज से स्टार्ट होता है, देन इट कैन द अदर थिंग्स कैन ऑल्सो ऐड ऑन टू इट, ये ऐड ऑन हो सकती है। सो अर्ली यूजिंग ड्रग्स एट एन अर्ली एज कैन कॉज वेरियस चेंजेस इन देयर डेवलपिंग ब्रेन, उनके ब्रेन में भी अल्टरेशन होता है। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि अल्कोहल क्या करता है या ड्रग्स क्या करते हैं, इट गिव्स यू अ हाई डोज ऑफ डोपामिन। ये जब डोपामिन का जो हाई डोज होता है, और स्पेशली उन बच्चों में जिनमें कि थोड़ा सा कहीं ना फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी होती है, या कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ एक उनके अंदर नेगेटिव सेल्फ इमेज होती है या पुअर सेल्फ इमेज होती है, तो उन बच्चों के अंदर सब्सटेंस का यूज एक हायर डोज ऑफ डोपामिन को देता है, और देन इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो अर्ली यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देन ऐसा भी देखा गया है कि वो बच्चे जो किसी न किसी तरह के इमोशनल, फिजिकल या सेक्सुअल एब्यूज के शिकार होते हैं, विक्टिम्स होते हैं, दे हैव दिस थिंग कि वो उस फीलिंग से, उनके अंदर पुअर सेल्फ इमेज हो सकती है, उनके अंदर लो सेल्फ एस्टीम हो सकता है, उनके अंदर लो कॉन्फिडेंस हो सकता है, और उनके अंदर सेल्फ हेट्रेडनेस भी होती है। तो इससे एस्केप करने के लिए, इससे बचने के लिए, उस पेनफुल एक्सपीरियंसेस से बचने के लिए कई बार ये जो इजी सहारा बन जाता है, इजी कोपिंग मैकेनिज्म होता है, जिसमें कि बच्चे सब्सटेंसेस को लेना शुरू कर देते हैं। डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं पीयर का सपोर्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। सेकेंड एजेंसी, यदि हम स्कूल की बात करें, तो स्कूल कैन ऑल्सो प्ले अ वेरी इफेक्टिव रोल इन अवेयरनेस, मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ सब्सटेंस यूज। टीचर्स ऑब्जर्व कर सकती हैं कि अगर बच्चे का पुअर क्लासरूम बिहेवियर है, बच्चा क्लास एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बच्चा किसी भी तरह की सोशल स्किल्स को लैक कर रहा है, जिसमें सोशल कॉम्पिटेंस है, सोशल एडजस्टमेंट है, एडेप्टेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सारी चीजें बच्चे के अंदर सोशल विड्रॉल है, तो इन सारे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके बच्चे के साथ एक चैनल को, कम्युनिकेशन चैनल को एस्टेब्लिश किया जा सकता है। Then if the child is not performing well in academics as well as is not participating in co-scholastic activities, तो वहां पर बच्चे का जो डिविएशन होता है, कि बच्चा डिविएट होता जा रहा है मेन स्ट्रीम से, बच्चा अपने आप को एक्सक्लूड करता जा रहा है, so teachers can identify that symptoms, this because such children are again at a very high risk. Then their association with drug abusing peers, वो बच्चे जो ऑलरेडी ड्रग्स में हैं, वो तो क्योंकि हमने देखा यहाँ पर सोशल लर्निंग मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट रोल, थ्रू लर्निंग, थ्रू इमिटेटिंग, थ्रू मॉडलिंग, बच्चे कई बार ऐसी चीजों को अप्रूवल की तरह देखते हैं कि ओके दिस इज अप्रूव्ड, दिस इज अप्रूव्ड इन द सोसाइटी। इस तरह के पीयर्स के साथ एसोसिएशन कैन पुट देम ऑन रिस्क। देन it is very important because nowadays it is seen that various availability channels are there in the school. कुछ रैकेट्स कह सकते हैं, कुछ बच्चे हैं जो ऑलरेडी इसके अंदर हैं, वो चैनल का काम करते हैं। स्पेशली हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में देखा गया है कि इस तरह के प्रॉपर चैनल्स जो है वहाँ पर एक्टिव रहते हैं। तो ड्रग्स की अवेलेबिलिटी कैसे है स्कूल में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो इन चैनल्स को आइडेंटिफाई करके और इन चैनल्स पर ड्रग्स की सप्लाई को रोकने का काम बहुत इफेक्टिवली किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द पीयर प्रेशर। Peer pressure is a strong factor, like to spot in their place, like group में fit in होने के लिए, कई बार conformity के लिए, but just to be in the group,
they follow the peers, they follow the group norms को वो follow करते हैं. तो substance use में और misuse में, especially adolescent age में, especially young people में, peer factor plays a very important role. So they are under the influence of their peer. You know, then there is a factor that they have the deviant peer relationship. So deviant peer relationship मतलब वो उन बच्चों के साथ हो जाते हैं जो already deviant हैं, और उनके साथ affiliate होने के लिए they also start showing deviation. Then sometimes they want to have this popularity. यहाँ पर media एक बहुत important role play करता है. They see sports celebrity or in advertisement, they see film stars in displaying, you know, this the kind of behavior that they are smoking, they are using wine, because all such advertisements, all such ads are displayed and during the prime time without any restrictions. तो वहाँ पर भी तो child wants to gain that popularity. Then bullying. Sometimes the child is subjected to bullying. So when the child is subjected to bullying, then definitely to overcome with that, उस चीज से overcome करने के लिए, they may, you know, connect with the group, they may affiliate with the group who are, you know, they see as a powerful people, they see as the powerful children. तो उनके साथ उनका connection, they can associate with the gangs. वो उन gangs को join कर लेते हैं जो कि उन्हें लगता है कि उनको save कर सकती है, उनको बचा सकती है. So peer pressure plays very important role. Then there are various other psychosocial factors. वो उन psychosocial factors जिसमें कि emotional factors, सोशल फैक्टर्स भी होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना. कई बार बच्चे में पुअर सोशल कोपिंग स्किल्स होती है, बच्चा जो भी लाइफ के जो स्टॉर्म्स होती हैं, लाइफ के चैलेंजेस हैं, उनको फेस करने में बच्चे को प्रॉब्लम होती है. या समटाइम्स यू नो द चाइल्ड सीज दैट this drug using behavior is approved in family or in peer or among peers or in community, then there is a lack of belongingness. Child is lacking the bond with the institution, with the religious institution, or with the school, or with the neighborhood, or with the family. So this lack of belongingness, this lack of connection often plays a very important role and often put child at a higher risk. So these की जो ये की रिस्क पीरियड होता है, दैट इज द मेजर ट्रांजिशन फेज. जो मेजर ट्रांजिशन फेज को जिसमें कि फर्स्ट ट्रांजिशन फेज हम देखते हैं वो है एलिमेंट्री स्कूल से जब बच्चा मिडिल स्कूल में एंटर करता है. ये एक अर्ली एडोलेसेंट फेज होता है और बच्ची को नए एकेडमिक चैलेंजेस होते हैं, बच्चे को नई सोशल सिचुएशन को फेस करना पड़ता है, बच्चे को एक वाइडर ग्रुप ऑफ पीयर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है और एडजस्ट करना पड़ता है. सो यहाँ पर बच्चे का फर्स्ट एक्सपोजर भी होता है टुवर्ड्स दिस सब्सटेंसेस. यही एक फर्स्ट स्टेज होती है जहाँ पर कि 8th ग्रेडर्स, रिसर्च हैज आइडेंटिफाइड 8th ग्रेडर्स एज द इनिशिएटिंग फेज. उसी तरह से जो सेकेंड ट्रांजिशन फेज होता है वो है व्हेन द चाइल्ड एंटर्स इनटू द हाई स्कूल. दे फेस एडिशनल चैलेंजेस. वहां पर कि बच्चे को फिर से चैलेंजेस मिलते हैं, बच्चे के अंदर सोशल, इमोशनल और एजुकेशनल चैलेंजेस को फेस करना रहता है और एडिक्वेट कोपिंग मैकेनिज्म नहीं रहता है. उनके अंदर बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं. ये स्टेज वैसे भी रोलर कोस्टर स्टेज मानी जाती है जहाँ पर कि इमोशनल टर्मोइल बहुत ज़्यादा हाई स्विंग पे होता है. तो यहाँ बच्चे का जो एक्सपोजर अगर किसी भी सर्कमस्टांसिस में, किसी भी सिचुएशन में होता है, द चाइल्ड इज एट द मैक्सिमम रिस्क. यहाँ पर बच्चा मैक्सिमम रिस्क पर होता है. देन द थर्ड ट्रांजिशन फेज इज व्हेन यंग एडल्ट्स मूव फॉर द कॉलेज और एंटर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क. और वहाँ पर उनका एक नए तरह के एनवायरनमेंट में दे हैव द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दे वांट टू हैव दिस थिंग, दे वांट टू एक्सपीरियंस and they are exposed to the various activities. So these major transition phases, stages are the key risk periods in the life of a child. इनको आइडेंटिफाई करके और यहाँ पर फैमिली में, स्कूल में सपोर्ट प्रोवाइड करना बहुत इम्पोर्टेंट है. यदि हम देखें
तो इसके बाद हमारा जो यदि हम इसको कंक्लूड करें तो इन रिस्क प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही अवेयरनेस मैनेजमेंट और प्रिवेंशन इंटरवेंशन प्रोग्राम के लिए प्रिवेंटिव फैक्टर्स बनते हैं। देन अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। ऐसा देखा गया है कि children has very least awareness about the risk factors. So if we make them aware that these are the risk factors and how they can develop, resistance to these risk factors, then definitely they can, resist themselves. They can have this resilience. They can have this, courage. They have this assertiveness that they can say no to this. They are being opposed to it, and at the same time, we can stop the early use of it. So I would like to say that early identification of risk factor is very important, because यही predisposing factors हमें आगे prevention में बहुत important role play करते हैं. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. You expressed a lot about this particular topic and you have touched some of the various important points. To say a few, you mentioned about the predisposing factors that make a child vulnerable to this menace of substance abuse. Then adequately you mentioned about the family environment and the strong bond between a student, a parent, a teacher. So there's a complete collaboration in the sense that they try to understand each other and try to work out the things that would be helpful in the betterment of the child. Then rightly mentioned about it's hard to face rejection whenever it comes to students, especially adolescents, whether it's about the sexual orientation, whether they're getting less grades, they feel humiliated in the class. So it's really hard to get into that. Apart from that, they also face physical, emotional and sexual abuse. They might be more vulnerable to substance abuse. And you have touched some important points like social inclusion, peer inclusion, then the media. The role of media is really big, and there's a need to gather more attention on the fact, the kind of advertisements that are being produced these days, just to show that this particular trend, it's viral or it's trendy or it seems cool. So thank you so much for highlighting all these important points. When we are discussing this particular topic in the context of schools, it becomes really important to know that how these substances are available and how do students get access to these substances. For that, I would like to invite in this conversation Dr. Sonal Sharma. Just a slight request to all our panelists, we have certain time considerations, time foundations in our session, so please make it precise. Yeah, Sonal ma'am. Thank you so much, Simran ma'am, for inviting me this question. निधि मैम एंड वीना मैम ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है. मैं उसी चीज को बस थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगी. क्वेश्चन है अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस का, सब्सटेंसेस की स्कूल में कैसे पहुंच रहे हैं. सो द प्रेवलेंस ऑफ सब्सटेंसेस is very common nowadays, and the findings of the various studies have shown that a total 18% of the students are found involved in substance using. The rates are very alarming, as 1 out of every 8 to 10 children are found in substance use. So now we have to be a little concerned over this issue, क्योंकि school is the place जहाँ पर हम बात करते हैं कि child का एक पूरा डेवलपमेंट हो रहा है पर्सनालिटी का. एंड वी ऑल नो दिस फैक्ट दैट सब्सटेंस अब्यूज हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देयरबाय रिड्यूसिंग द एकेडमिक अचीवमेंट. अवेलेबिलिटी को हम इजी बना रहे हैं, इसीलिए एक्सेस हो पा रहा है. अब जैसे कि निधि मैम ने बताया, इतने सारे फैक्टर्स बताए. सो जो भी फैक्टर्स मैम ने बताए, दे ऑल फैक्टर्स लाइक दे वर्क एज अ कैटलिस्ट in enhancing the availability and access of substances in the schools. So first हम बात करते हैं कि ये substances का access schools में हो कैसे रहा है, क्योंकि कुछ schools ऐसे हैं जो बहुत ही A grade schools हैं, वहाँ पर easily students को available नहीं हो सकते. But definitely India is a land of diversity. हर तरह के हमारे पास areas हैं जो fully developed है, कुछ areas ऐसे हैं जो rural areas हैं. These are underdeveloped areas. And we can't deny the fact that the teachers working in that institutes, they are involved in many other activities besides curricular activities. They will go on the surveys. They are involved in midday meal programs. They got duties in the elections. So इससे क्या होता है ना कि they got diverted. उनका जो attention है वो divert होता है. And the meanwhile students get free time
एंड उस फ्री टाइम में क्या करें? खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है, तो इस वजह से ना उनके दिमाग में थॉट्स आते हैं। एंड ऑफन हम ये चीज देखते हैं कि मीडिया ने ग्लैमराइज कर दिया है द यूज ऑफ सब्सटेंसेस। अब हम जितनी भी हिट फिल्म्स हैं, अगर बात करें सिंस लास्ट 5 और 10 इयर्स, आप देखेंगे हर दूसरी या तीसरी फिल्म ऐसी है जिसमें एक्टर को इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है कि वी हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ इमेज इन आवर माइंड, वी कंसीडर देम एज अ गुड एक्टर। हम कहते हैं वाओ, ये सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं हम, और जो हमारे एडोलेसेंट्स हैं उनको आइडियल कंसीडर कर रहे हैं। उड़ता पंजाब में आप देखिए, पंजाब में किस तरीके से सिचुएशन दिखाई है कि एडोलेसेंट इन्वॉल्व है इन टेकिंग द सब्सटेंसेस। और अगर हम संजू की बात करें, उसमें पूरा जो कैरेक्टर है रणबीर कपूर का, इस चीज में दिखाया है कि वो कितना अल्कोहलिक रहता है, इवन ही टेक्स द ड्रग्स ऑल्सो, बट हम कितने गट्स के साथ उसको अपने बच्चों को दिखा रहे हैं, मूवीज में जा रहे हैं, वो मूवी सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रही है। और अगर हम आगे इसी चीज को और बढ़ाएं तो कॉकटेल मूवी आई थी, उसमें वेरोनिका का जो कैरेक्टर था वो दीपिका पादुकोण ने प्ले किया था, एंड उस मूवी में हमने देखा कि वो पूरे टाइम ड्रिंक करके क्लब्स में रहती है, क्लबिंग वाज हर हॉबी। तो बच्चों पे जो एक इमेज जा रही है, उनके माइंड में उस तरीके से परसीव कर रहे हैं, ओके नाउ आवर एल्डर्स कंसीडर अस एज एल्डर्स व्हेन वी विल डू दिस सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिविटी। अब इससे भी बात नहीं बनी तो हमने जो हमारे प्रोडक्ट्स जो हम यूज करते हैं उसमें भी सब्सटेंसेस को लाना स्टार्ट किया। किंगफिशर का एक देखिए, वो अपने बियर को इस तरीके से टैग करते हैं द फ्रेंड ऑफ गुड टाइम्स। फिर एक और आता है आगे, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे दो यार। तो उसका क्या मतलब है कि मीडिया इस तरीके से पोर्ट्रे करें कि आप दो फ्रेंड्स तभी मस्ती करेंगे व्हेन दे यूज और कंज्यूम सम सब्सटेंस। प्रॉब्लम ये है कि हम पोर्ट्रे ही वही कर रहे हैं, जो इमेज हम बना रहे हैं अपने आसपास वही चीज हमारे बच्चे सीख रहे हैं। दे परसीव द थिंग्स दैट वी शो देम, दैट्स द रीजन दे वांटेड टू ग्रो अप सून। उनको जल्दी बड़ा होना है बिकॉज दे वांट टू इमिटेट अदर्स, दे वांट टू इमिटेट द एक्टर्स, दे कंसीडर एक्टर्स एज देयर रोल मॉडल्स और आइडियल। वो इमेज जो हम उनकी बात करते हैं, किस तरीके से वो अपने आप को देखते हैं। और पीयर प्रेशर जो कि निधि मैम ने बात की, रीना मैम ने भी बोला कि क्या ऐसे रीजंस हैं, तो उन रीजंस को अगर हम सम अप करें तो पीयर प्रेशर इज द बिगेस्ट रीजन, बिकॉज द स्टूडेंट्स वांटेड टू फिट इन द सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड। वो जो गैंग एज है, कुछ स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑफ कोर्स क्लास इज अ मिनिएचर सोसाइटी, एक क्लास में 40 to 50 स्टूडेंट्स अगर होते हैं, सो दे बिलोंग टू डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्शंस, दे कम फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस। तो जो एक एलीट क्लास के बच्चे हैं या जिनके पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं, उनके अंदर ये लगता है ना कि ओके वी आर द सुप्रीम, तो हम जैसा करेंगे अदर स्टूडेंट्स हमको देख के हमें आइडियल कंसीडर करेंगे, वी विल बी रोल मॉडल फॉर देम। तो उस सिचुएशन में वो उनको प्रेशराइज करते हैं, एंड द अदर फ्यू स्टूडेंट्स, उनको ये लगता है कि इफ वी इमिटेट देम तो अदर स्टूडेंट्स विल कंसीडर देम एज द पार्ट ऑफ देयर कूल ग्रुप, तो हम भी कूल बनेंगे सबके सामने, बिकॉज वो जो नीड है टू फिट इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप वो उस टाइम में बहुत हावी होती है उनपे, क्योंकि एडोलेसेंट है, एंड एज वी ऑल नो एडोलेसेंट इज अ ट्रांजिशन फेज। जो उस टाइम पे बच्चे होते हैं, दे आर नीदर द फुली ग्रोन एडल्ट्स नॉट दे आर द किड्स। अगर आप उनसे बोलेंगे कि आप बच्चे हो, वो चीज तो उनको हर्ट होगी, और अगर उनसे कह देंगे कि आप बड़े हो, तो एट सर्टेन टाइम वो उस चीज को भी डिनाई करेंगे, नो वी आर नॉट ग्रोन अप, वी आर अ किड। तो जो बिहेवियर होता है उस टाइम पे उनका, वो बहुत चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, जिसमें सोशल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, साइकोसोशल फैक्टर्स, वो सब रहते हैं। वो उस टाइम पे जगलिंग, उनके दिमाग में जगलिंग हो रही होती है बिटवीन दीज डिफरेंट रोल्स। सो अब बात आती है अवेलेबिलिटी, कि स्कूल में अवेलेबल कैसी हैं ये चीजें। तो अब हमने जब बात की कि रूरल एरियाज में, बिकॉज टीचर्स आर इन्वॉल्व इन अदर वर्क्स बिसाइड एकेडमिक वर्क्स, सो स्टूडेंट्स गेट लॉट ऑफ फ्री टाइम। और रूल ये कहता है कि जहाँ पे भी स्कूल है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रूल है। कुछ स्टेट्स कहते हैं कि विद इन 1 किलोमीटर ऐसी कोई शॉप नहीं होगी जो अल्कोहल, टबैको और ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो दे। कुछ स्टेट्स में है कि विद इन 50 मीटर्स की रेंज में। बट अगर हम वहीं रूरल या सेमी रूरल एरियाज में चले जाएं तो यू कैन इजीली फाइंड द शॉप्स वेयर दीज सब्सटेंसेस आर
इजीली अवेलेबल, टीचर्स बिजी हैं, अब स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए नहीं है, कोई भी मॉनिटर करने के लिए नहीं है। सो वहां पर ये प्रॉब्लम आती है कि वो इजीली जो लोकली अवेलेबल सिगरेट होती है, जैसे आम बोलचाल की भाषा में बीड़ी बोलते हैं, तो आप देखिए गांव के बच्चे सिर्फ बीड़ी के साथ दिख जाएंगे, क्योंकि एडोलेसेंट एक ऐसा फेज है जहाँ पे सबसे ज्यादा गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। एंड ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ, अभी अगर हम बात करें जनरलाइज कर दें, तो सिर्फ जो डेवलप्ड स्कूल्स है, अर्बन एरिया है, वहां पर अवेलेबल है। रूरल बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, बट द थिंग इज कि प्रॉपर डायरेक्शन देने वाला उनको वहां पर नहीं मिलता है। तो इस वजह से आपको ये इन्वॉल्वमेंट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और अगर हम अर्बन एरियाज में बात करें, ए ग्रेड स्कूल है, वहां पर तो प्रॉपर सिक्योरिटी है, सीसीटीवी है, बट स्टिल कैसे ये जो रिपोर्ट्स वो डेट 1 आउट ऑफ एवरी 8 to 10 चिल्ड्रन आर फाउंड इन सब्सटेंस अब्यूज। तो अब उस चीज के लिए भी ना उन्होंने एक बैकअप निकाला कि हम क्या अल्टरनेटिव रख सकते थे। तो वो क्या कर रहे हैं कि व्हाइटनर को यूज करते हैं, बिकॉज व्हाइटनर में क्या हो रहा है कि टॉलिन होती है, इट एक्ट एज एन इनहेलेंट, सो उनको सडन किक देती है। एंड ये जो फीलिंग है, फीलिंग ऑफ सडन किक, ये डिपेंड करती है ऑन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो उन्होंने लिया है, इनटेक किया है। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं कि व्हाइटनर हो गया, फिर नेल पेंट रिमूवर एंड स्प्रे, because after smelling it they go into some another world। उनको ये लगता है कि ओके हमें इस चीज से अब एक अलग सी फीलिंग आ रही है जो हमें प्लेजर प्रोवाइड कर रही है, तो वो उस चीज को ना रेगुलरली लेने लगते हैं। फिर क्या होता है कि जो डिओड्रेंट्स हैं, बॉडी स्प्रे हैं, हेयर जेल्स हैं, इनकी स्मेल को वो लोग यूज करते हैं। शुरुआत में वो सबको थोड़ा सा अलग लगती है, बट अगर यही स्मेल वो बार बार लेने लगते हैं तो ये एडिक्शन बन जाता है, जो कि उन्हें सब्सटेंस यूज की तरफ पुश करता है। देन कुछ बच्चे ब्रेड एंड पराठा पर मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, तो उसमें उसकी रिजल्ट ये था कि कुछ स्टूडेंट्स जब उनको अपने अच्छे स्कूल्स में इजीली सब्सटेंसेस अवेलेबल नहीं होते हैं, तो दे पुट आयोडेक्स और बाम ओवर देयर पराठास एंड ब्रेड्स एंड दे टेंड टू ईट इट to get a sudden kick or to get high on the intoxicants। तो ये चीजें इतनी उन लोगों ने बैकअप ढूंढ लिया अल्टरनेटिव्स कि हम ये नहीं सोच सकते कि ओके अगर सिगरेट है या अल्कोहल है या तंबाकू है या बीड़ी है तभी ये लोग एडिक्टिव हो रहे हैं टुवर्ड्स दिस। इनके पास अल्टरनेटिव है कि किस तरीके से इन्हें अपने आप को सडन प्लेजर को लेना है, या किस तरीके से दे वांट द फीलिंग ऑफ किक और टू गेट फिट इन द सोसाइटी। और कि अगर हम इस तरीके से बिहेव करेंगे तो क्लास हमें ये सोचेगी कि ओके ही इज अ ग्रोन अप, शी इज अ ग्रोन अप, शी इज एन एडल्ट नाउ। तो अवेलेबिलिटी एंड ईज इस पर डिपेंड कर रही है कि हम एक्सेस कैसे कर रहे हैं, और एक्सेस भी इनडायरेक्टली कनेक्टेड है ईज के साथ, क्योंकि अल्टरनेटिव इन लोगों के पास हर चीज का है। संजू मूवी से हमने ये तो देखा कि संजय कपूर रणबीर कपूर किस तरीके से पूरे टाइम ये इंटॉक्सिकेंट्स ले रहा है, बट हमें उससे ये सीखने की जरूरत है कि विल पावर इज मोर इम्पोर्टेंट। इफ यू आर विलिंग टू डू एनीथिंग यू कैन डेफिनेटली डू इट। लास्ट में मूवी में वो इन सब चीजों को छोड़ता भी है, और वहां पर एक इंडिविजुअल की विल पावर सबसे इम्पोर्टेंट है। रूल्स हम लोग बनाते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इन सब चीजों से दूर रहे, बट प्रॉब्लम आती है अगर हम इंडिया में देखें, इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें इम्प्लीमेंटेशन की। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट एवरी रूल इन इंडिया, बिकॉज इन एवरी स्टेट देयर आर डिफरेंट रूल्स। अब अगर हम अल्कोहल के केस में बात करें, अल्कोहल कंजम्पशन की, तो महाराष्ट्र में a person who is 25 years of age, he or she can consume alcohol, but to purchase alcohol one can be of 18 years of age, so it creates a confusion. How one can know if a person is above 18 and is buying alcohol? So what is the guarantee he is or is not consume the alcohol? अब 18 साल का तो खरीद के ले गया, बट वो 25 का नहीं है, तो किसी को कैसे पता चलेगा कि ये सिर्फ खरीद के ले जा रहा है और पिएगा नहीं? अब स्कूल पैरामीटर में भी हमने बात की कि कितने मीटर्स पे शॉप्स होनी चाहिए, बट वो एरियाज जो डेवलप्ड है वहां हम मॉनिटर कर सकते हैं, बट इतनी सारी गलियां हैं, अंडर डेवलप्ड जगह है, वहां पर मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां कैसे मॉनिटर किया जाए।
एंड अल्टरनेटिव हम सबका सोचते हैं, हमारे स्टूडेंट सोचते हैं. सो हमें उन्हें समझाना पड़ेगा कि इन सब चीजों से दूर रहना है, बिकॉज अल्टीमेटली इट विल हैम्पर देयर एकेडमिक्स. वो उनके हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, मेंटल हेल्थ पे डाल रहा है. एंड जैसे जैसे हम भी बात कर रहे हैं कि अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स आर नाउ आर मोर टेंड टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट कल्चर. They are juggling to provide the good means to their families or their children. But उससे क्या हो रहा है ना कि they have less time towards their children. Nuclear families हैं, so there is no one to monitor or observe the little kids. तो यहाँ पर बात आती है कि अगर घर में कोई बड़ा हो, लाइक दादा दादी नाना नानी, तो बच्चे को देख रहे हैं, उनको प्रॉपर अच्छी अच्छी कहानियां सुना के थ्रू मोरल स्टोरीज उनको गाइड कर रहे हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है. और पीयर प्रेशर की हम बात करते हैं कि बच्चा इनिशियली ठीक है, गुड, अच्छा है, आई डोंट हैव टू टेक दिस थिंग टू बिकम कूल इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स. बट वो जो कॉन्स्टेंट पीयर प्रेशर होता है कि हम तुम्हें अपना फ्रेंड नहीं मानेंगे जब तक तुम ये नहीं लोगे, या तुम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, जब तुम इस चीज को कंज्यूम करोगे या पियोगे तभी तुम हमारे फ्रेंड रहोगे. उस टाइम पे ये जो कंफ्यूजन की स्टेट आती है इन द माइंड ऑफ अ चाइल्ड कि रियल मी मैं कैसा हूँ और मुझे कैसा फोर्स किया जा रहा है. क्योंकि एडोलेसेंट में जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो एज है ये फ्रेंड के आइडल माना जाता है, इसलिए से फ्रेंड या गैंग एज भी बोला जाता है कि बच्चे को वही चीज सही लगेगी जो उसके फ्रेंड्स उसको बोल रहे हैं. So they consider their friends as their role models. तो वहाँ पर ये चीज आती है कि जब हमें प्रॉपर गाइडेंस देनी है बच्चे को, उसको बताना है कि चीजें अगर इजीली अवेलेबल भी हैं, तुम्हारे एक्सेस में है, बट फिर भी आपको उससे एक डिस्टेंस बना के रखना है, जस्ट बिकॉज फॉर योर सेल्फ, जस्ट बिकॉज फॉर योर गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. यहाँ पर आपको कोई नहीं बचा सकता. ये एक ऐसा समंदर है कि आपको खुद ही इससे निकलना है. There is no one to save you from this, and you are the only one who can save yourself. So by these words, I conclude my talk. Over to you, Simran ma'am. Thank you so much. These important concepts at the same time so beautifully to our viewers. You rightly mentioned about the way students see themselves, कि हम अपने आप को किस तरह से देखते हैं. We feel that whether we are good enough or we are not good enough to fit in a circle, to behave in a certain circumstances. बहुत सही तरीके से आपने साथ ही ये भी बताया कि किस तरह की गाइडेंस बच्चों को दी जानी चाहिए. इसके साथ ही आपने ये बताया कि जो फीलिंग है, द फीलिंग ऑफ चेंज, दैट टेम्परेरी फीलिंग, हाउ दैट ट्रांसफॉर्म्स इनटू एडिक्शन. थैंक यू सो मच. So here we would like to request our next panelist, Dr. Avni Parashar, to step in the conversation. So, ma'am, you are going to discuss about a very important topic related to this. It is about the role of school counselors. I would like to add to this. When I was a kid, like when I was studying in my school, this concept of school counselors was not in my school. So, how important is that and what is their role? Please inform our audience more about that. Yes, thank you so much for this very important question, Simran. As you all know, the role of counselor in school is very different. First of all, the role of, many people are still in myth कि जो counselors हैं वो सिर्फ कुछ अगर mental disorder है या कुछ बहुत ज़्यादा severe problem है, then only we should go to the, counselor. But nowadays, why it is important in all the schools and colleges? Because several things which according to me is prevention is better than cure. क्यों हम उस स्टेप तक जाएं कि जब हम इतना सीवियर कोई प्रॉब्लम हो जाती है फिर हम काउंसलर को अप्रोच करें. So the role of counselor in school is to give, sensitize students, and not only it is the role of counselor. Counselor is a team, and in this team, parents, teachers, all the subject teachers, management of school, administration of school, and each and everyone, students, all are a part of that team. So one counselor is not, it is not only the role and responsibility of counselor, it is the role and responsibility of whole administration. And they also need the support of parents also. So the main role is to empower student, and that what is your value.
if through different sessions, through different awareness programs, through different campaigns, if a counselor is doing this, so this will be a great help and benefit to all the students. First of all, when a child is very young, what we used to tell that fast food and balanced diet, ये दो चीजों को हम बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट करके बचपन से उन्हें बताते हैं कि fast food is not good for your health. So what we are doing two things. We are putting the negative thing in front of them as well as the positive thing also. तो ऐसा अभी हमने सबने डिस्कस किया कि हाउ द अवेलेबिलिटी इज देयर, हाउ दे आर इन विद इन द रीच ऑफ स्टूडेंट्स. So we cannot, you can't make ask them not to watch those movies, not to watch advertisements, because in this age you can't uh, say all these things. जितना हम उनको बाउंडेशन नहीं कर सकते, तो all these things will be there. What is the role? That beta all these things will be there. What you have to choose, it's up to you. तो वहां हमें मेन चीज है प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग. दीज टू थिंग्स शुड बी देयर, दैट व्हाई यू आर स्विचिंग टू दीज थिंग्स. इफ somebody will say, but of course आज नहीं, ठीक है आप स्कूल में उनको प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दे रहे हैं, ऑल सीसीटीवीज, ऑल द टीचर्स आर मॉनिटरिंग देम, but the role of counselor is to prepare them for other life skills as well, is preparing them for whole life. तो ऐसा नहीं है कि up to 12 if they are not using any substance, anything, so it is just the role of counselor or administration कि okay after 12 it is not our responsibility. The responsibility of school and school counselor is to prepare them for whole life. So through different awareness programs, what we can do, orient them before they could reach to those substances, orient them and tell them that what will be the negative effect of those substances. Peer pressure hoga hi, but how to deal with these types of peer pressure, that is also very important. कि अगर आपसे friends ऐसा बोलेंगे तो आप क्या बोलोगे? Would you like to taste? Would you like to do? Would you like to drink? क्या how valuable is your life? कई बार हम क्यों एडवेंचरस करते हैं? बिकॉज वी आर नॉट वैल्यूइंग आवर लाइफ, वी आर वैल्यूइंग जो हमारा गोल है वो हमारे सामने नहीं है. इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ दैट स्टूडेंट्स दे डोंट नो. तो अगर हम ये कुछ ओरिएंटेशन उनके माइंड में डालते हैं, कुछ उनके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स डालते हैं, then they will definitely realize that yes, ये जो मुझे चीजें हैं वो कुछ टाइम के लिए मुझे जरूर सेटिस्फैक्शन देंगी, सारी चीजें देंगी, बट इट इज नॉट फॉर एवर. तो ये मेरे लिए बस एक कुछ पलों के लिए है. तो फॉर अ मोमेंट माई लाइफ इज नॉट फॉर अ मोमेंट, माई लाइफ इज फॉर अ इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी. देन जैसा मैंने कहा कि गुड हैबिट्स पर भी हमें एम्फेसिस करना चाहिए. So yoga, meditation and nature therapy or even pet therapy, when they have, अभी हमने डिस्कस किया कि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है, तो कुछ क्या कंस्ट्रक्टिव आप उन्हें वर्क ऑलरेडी असाइन कर सकते हैं. So that is also very important, that how healthy habits are most important thing. Nowadays काफी चीजें हैं कि हमें योगा मेडिटेशन की और स्टूडेंट्स आर आल्सो अवेयर. We have yoga sessions in schools also. So to arrange those sessions is also very important कि वो जाने की healthy life habit, how आप बोल देते हैं कि आप योगा करिए, but how? So if they are doing in the school, the sports activities are in the school, so they will be more involved in it. Then healthy life, all the life styles is very important. So healthy lifestyle is वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप बीमार हो जाओगे, ओके, तो यू हैव टू टेक मेडिसिन. एक छोटी सी बीमारी से हमें कितनी तकलीफ होती है. एंड इफ वी विल मूव टुवर्ड्स सच टाइप ऑफ डायरेक्शंस कि आप सब्सटेंस अब्यूज और एडिक्शन की साइड जाएंगे, तो व्हाट विल बी द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल देम
एक्चुअली बच्चे सोच ही नहीं पाते, वो सिर्फ उसका एक ये क्राइटेरिया या एक पर्सपेक्टिव यही होता है कि मुझे इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा, या कोई उसको इस एज में उन्हें अगर स्ट्रेस है तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू दैम, कि जब तक मैं इस नशे में हूँ मुझे और कोई स्ट्रेस नहीं रहता, मुझे कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। बट व्हाट विल हैपन व्हेन यू वेक अप? तो ये हमारा सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको उन्हें सिर्फ उस पल के लिए नहीं तैयार करना बल्कि पूरी लाइफ के लिए तैयार करना है। तो इफ दे आर एडिक्टेड देन द रोल ऑफ काउंसलर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि अगर कोई बच्चा, सबसे पहले तो हम सेंसिटाइज करें कि बच्चा इज ओवर चाइल्ड, है ना, पीयर प्रेशर है या स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म है, इन सबसे डील द स्टूडेंट शुड एम्पावर, वो उसमें से एम्पावरमेंट होनी चाहिए, इतना अच्छा डिसीजन मेकिंग होना चाहिए कि वो इनसे नो कह सके, से नो टू सच थिंग्स। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि इफ योर फ्रेंड्स आर आस्किंग तो यू विल ऑलवेज हैव टू से यस, so you have to say no to certain things. That should be very much, it should be very strict that you should say no to these things. First and foremost is the counselor should have no prejudice and discrimination. This is the very important quality and characteristic of counselor. तो अगर हम कई बार जो टीचर्स हैं या कई हमारे माइंड में भी ये रहता है कि भाई ये तो ना रिच पीपल ही करते हैं, या ये कोई पुअर है, या आपने कहा कि रूरल एरियाज में ज्यादा अवेलेबिलिटी है और अर्बन एरियाज में नहीं है, और वाइस वर्सा, बट इट इज नॉट लाइक दैट. Second thing, the counselor and parent interaction. It is very important. If a counselor knows through different reference कि अगर आपको किसी टीचर ने, even if parent are, जैसे हमने पहले discuss किया that what are the characteristics that your child is prone towards it. तो laziness है, physical fatigue है, mind पे focus concentration कुछ नहीं हो रहा है, तो मे बी पेरेंट आए तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि फोकस नहीं कर पा रहा, एंड थ्रू डिफरेंट इंटरेक्शन यू कम टू नो अबाउट द रियल रीजन बिहाइंड इट. So there should be a proper interaction between a parent and a counselor. See, this is the problem. और जो पेरेंट्स है वो एकदम एग्रेसिव ना हो जाए, है ना. हाउ नाउ द प्रॉब्लम इज देयर, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज इम्पॉर्टेंट. Next thing, there are several activities which a counselor can do within the school with the help of all these resources available. But sometimes the reference or a proper doctor or proper substance abuse counselor is important and is needed. So the most important is to refer that student to a proper source which can take care of that person. यहाँ पर अगर कुछ थेरेपीज काउंसलर्स यूज कर सकते हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है या एनएलपी है या कोई आप एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी, एनी थेरेपी इफ यू आर एबल टू यूज, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप एक ओरिएंट कर दें, उसको एक अवेयर कर दें दैट यस देयर इज अ नीड दैट आई शुड एडिक्टेड, बट लेकिन अब ये मेरी जिम्मेदारी है, it is my responsibility to get de-addicted from it and to move very happily in life. Then जो mind है, mind जैसा बताया गया कि जितना ज्यादा हम constructively उसको use कर सकते हैं, that is also important. So through different sessions and campaigns, the counselor and school can organize such constructive activities in which child not only as a repetitive way, in which child explore himself, or the students are able to explore themselves more beautifully, that how beautiful we are, our life, and we are valuing our body, our mind, each and everything. तो जब बच्चे का जो सोच है, थॉट प्रोसेस है, तो इस डायरेक्शन में जाता है, then the student will definitely going to help himself, और वो आपके पास खुद आकर कहेगा कि अगर yes I am मैम कि मुझे ये इश्यू है and I am I want to get rid of, या मैं उससे बाहर आना चाह रहा हूँ. So it is also very important. Then it is
जैसे कुछ लाइफ स्किल्स हैं, मैंने बात की प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग की। अगर बच्चा अपने करियर के बारे में, एकेडमिक्स के बारे में वहां डाइवर्ट होता है, देखिए ऐसे बच्चे क्या होते हैं, कहीं फेलियर से डर के, स्ट्रेस से डर कर वो इस डायरेक्शन में आते हैं, सब्सटेंस अब्यूज करने लगते हैं। तो अवेलेबिलिटी इज देयर, हर जगह छोटी मोटी शॉप्स हैं, स्कूल के आसपास भी शॉप्स हैं, तो वो इजीली अवेलेबल है, सारी चीजें इजीली अवेलेबल है। तो इट इज द रोल ऑफ काउंसलर टू रीइंफोर्स अगेन एंड अगेन दैट सी इट ऑल द थिंग्स आर विद इन योर रीच। लेकिन आपको वहां हाथ बढ़ाना ही नहीं है। आपके हाथ में क्या होना चाहिए? योर करियर, योर लाइफ, योर थिंग्स, योर पर्पस। और ये कब होगा? जब बच्चे का एक क्लियर गोल होगा, व्हाट ही वांट टू अचीव इन हिज लाइफ। So that is also important. So if the goal is clear, if the purpose is clear, then it is very nice कि वो जो स्टूडेंट है वो इस डायरेक्शन में ना जाकर या अपने लाइफ को और अच्छे से समझ सके और इस लाइफ में जा सके। अब बात आती है रोल मॉडल, एडवर्टीजमेंट एंड मूवीज की। काउंसलर यहाँ ऐसे लोगों से भी मिलवा सकते हैं जो डी एडिक्टेड हो चुके हैं, जो पहले बहुत एडिक्शन में थे और नाउ दे आर डी एडिक्टेड एंड दे नो दैट नाउ देयर लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट। तो जो चीज छोड़ चुके हैं, ऐसे रोल मॉडल से भी आप मिलवा सकते हैं, या ऐसे लोगों के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जो इस सब्सटेंस अब्यूज में कहीं कभी नहीं गए हैं। इवन मोर, क्यों हम उन एक्टर्स या उन प्लेयर्स को ही हम देखते हैं जो इस सब्सटेंस अब्यूज में है या जो उसको प्रमोट करते हैं, उस एडवर्टीजमेंट में आते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ मूवीज ऑल्सो which are giving more moral values and teaching to, it's a lesson to others. So what they have to pick, it's up to them. So again, the role of counselor is very important because एक बच्चे को ये जानना जरूरी है कि पीयर प्रेशर से, स्ट्रेस से या फेलियर से इवन हम कैसे बच सकते हैं। अभी जो काफी ड्रग केस हुआ था उसमें ज्यादातर जो एक्टर्स थे या जो भी प्ले करते थे, उन्होंने कहा कि हम स्टेज पे जब हम क्राउड के सामने शो करते हैं तो थ्रू ऑल दिस वी गेट कॉन्फिडेंस और हम ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। बट अगर ये रोल मॉडल होंगे तो बट ऑफ कोर्स स्टूडेंट से हम इट इज नॉट गुड कि आपके रोल मॉडल्स कौन है। तो चूज योर रोल मॉडल्स वेरी वाइजली। देयर आर मेनी एक्टर्स आल्सो, they are very having very healthy lifestyle, तो आप उनके एग्जांपल्स दे सकते हैं। they are having healthy lifestyle, तो आप उनको फॉलो करिए। तो जब हम बुराई से हटा भी रहे हैं और अच्छाई उनको दिखा भी रहे हैं, मतलब नेगेटिविटी से दूर भी रखना है और पॉजिटिविटी के पास भी लाना है, तो देयर इज अ ड्यूअल थिंग टू डू फॉर अ काउंसलर। तो अगेन आई वुड लाइक टू just wrap up this thing that even the role of counselor is to give a direction to the student, plus many options in life and different therapies। यहाँ हम उनको प्रिवेंट भी कर सकते हैं और अगर वो एडिक्टेड हैं उसके बाद आप कहीं रेफर कर सकते हैं, रिलैप्स ना हो या उनकी आफ्टर केयर कैसे हो, वो आप पूरा एक थ्रू अ प्रॉपर केस हिस्ट्री, प्रॉपर केस स्टडी के थ्रू आप कर सकते हैं। So it is a combined effort from the school, management, administration, as well as parents. So the counselor is the center, and all these things are blended to the counselor. वो एक दूसरे से relationship में हैं, जुड़े हुए हैं। So it is very important role of a counselor to give certain information, to take certain information in a positive way and be positive. और यहाँ अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, सी द काउंसलर कांट डू ईच एंड एवरीथिंग। वहां हमें जिसकी सपोर्ट की जरूरत है वो काउंसलर्स जरूर लें, चाहे किसी एक्सपर्ट डॉक्टर हैं या पेरेंट्स हैं या कोई थेरेपिस्ट है, तो आप उन्हें प्रॉपर रेफर करें और इस जो बच्चे के लिए बेहतर है वो डिफरेंट एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग आप प्लान बनाएं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जरूरी नहीं है कि हम एडोलेसेंट पर ही फोकस करें। नाउ द प्री टीन्स आर मोर वनरेबल, वो
और अच्छे बहुत जल्दी सीख रहे हैं, यू नो। तो आप 5th 6th से और जितना भी टीनेज में उनको ओरिएंट कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट एग्जांपल्स। जरूरी नहीं है कि आप पूरा सब्सटेंस अब्यूज का ही एग्जांपल दें, थ्रू डिफरेंट एग्जांपल्स यू कैन say that okay, now the negative thing, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, if they are prone to substance abuse, वो सिगरेट पीते हैं फादर, तो क्या आपको अच्छा लगता है? Yeah, No. Dr. Avni, I would request you to please conclude your words. Yes. Thank you. So again, I would conclude by this that it is, you know, the role of counselor, which is very important. You have asked to, you know, give and take information, to have a proper plan according to the age groups in the school, with the help and support of proper administration, management, and the parental support is very, very important to empower student and to Yeah. take proper decision for their life. Thank you. Yeah, thank you so much, Dr. Avni, for coming up with those strategies. I hope they turn out productive for all our viewers, students, teachers, and parents watching out this session. Very appropriately, you have highlighted the responsibilities of a school counselor. And these responsibilities related to substance abuse, they are not only limited, substance abuse and substance use. They are not limited to just school counselors, but also teachers, parents, as mentioned by you, and the need and importance of a healthy lifestyle. That is something we need to teach our students, our kids out there. And very appropriately you mentioned again that the counselor should not have any prejudices or the biases. यानी जो counselor है उनकी कोई पूर्व धारणाएं नहीं होनी चाहिए. That is when they'll be able to make the right decision. So here we still have 20 minutes left in the conversation. I would like to invite our last panelist in this session, Dr. Daksha Parmar. A very warm welcome, ma'am. We have discussed about certain important elements in this conversation. I would request you to please throw more light on the prevention of substance abuse, which remains one of the most important topics of this session. I'll take a cue from the other panelists who have highlighted the majority of the problem and the bigger size of the problem. So I focus on the prevention. As said by earlier speaker also, that prevention is better than cure. So I'll start with how to prevent of substance abuse. So before I move to prevention, I want to discriminate between substance abuse and addiction. So substance abuse occurs when you use alcohol or prescription medicine and other legal or illegal substances or too much or in the wrong way. Then substance abuse differs from addiction. So how it differs from addiction? Many people with substance abuse problems are able to quit or can change their unhealthy behavior. But addiction on the other hand is a type of a disease. That is, it is beyond your control. It means you can stop using even when your condition causes you much more harm. Then I move to what is substance abuse and how am I going to prevent it? So substance abuse prevention, also known as drug abuse prevention, is a process that attempts to prevent the onset of substance use or limit the development of problems associated with using psychoactive substances. So prevention efforts may focus on the individual or their surroundings. If their surroundings are healthy, then you will be in a better position to prevent these. Substance use and mental disorders can make daily life activities difficult and impair a person's ability to work with family and fulfill other major life issues. So mental disorders has a direct relation with substance abuse. So mental disorder and substance use disorders are among the top conditions that cause disability in the United States. If we go further, prevention and early intervention strategies can reduce the impact of substance abuse and mental disorder. As I said earlier, that substance abuse has a direct relationship with mental disorder. The coexistence of these both mental health and substance abuse disorder is referred to as a co-occurring disorder. So mental health and substance use disorders affect people from all walks of life. It is not that only the rich suffer from it or the poor suffer from it. So it gets affected from all walks of life and all age groups.
Of course, adolescents are our prime consumers, but it is consumed by all age groups. So these illnesses are common, they are recurrent and often serious, but they are treatable, and many people do have recovered from it. As said by Dr. Ami, that it is the counselor's role to make the people meet different de-addicted people. So there are people who have history that they have recovered from it. So they can also play a major role. Then mental disorder involves changes in thinking, mood, and or behavior. These disorders can affect how we relate to others and make choices. Reaching a level that can be formally diagnosed often depends on reduction in a person's ability to function normally as a result of this disorder. How are we going to identify that a person is having this problem? So when he or she reaches a level that depends on the reduction in a person's ability to function normally, then we say that he or she is suffering from this problem. And obviously, we need to prevent this. So prevention activity works to educate and support individuals and communities to prevent the use and misuse of drugs and the development of substance use disorder. Substance use disorder occur when the recurrent use of alcohol and or other drugs causes clinically significant impairment, including health problems, disabilities, and failure to meet major responsibility at work, school, or home. As I said earlier, that it causes problems to all walks of life and all age groups. So when a person fails to meet his or her responsibility at work, school, or home, then we think that he or she is suffering some problem. So for people under the age of 18, the term is said as serious emotional disturbance, which refers to diagnosable mental, behavioral, or emotional disorder in the past year, which resulted in functional impairment in that substantially interferes with or limit the child or the functioning in the family, school, or community activities. Coming to the types of drugs that are abused. So hashish or marijuana ranks the first. So marijuana, as somebody else also quoted, it is the most commonly used illegal drug. And approximately 80% is people are using this. So it is the most current illicit drug used by the majority of people. Next in the list comes cocaine, then heroin, methamphetamine use, nicotine use, that is both smoking as well as smokeless consumption. Then inhaling, hallucinogen use, anabolic steroid use. So these are the types of drugs which are abused. Coming to how substance abuse develops. So before I proceed to prevention, how it develops. So there are, as said by earlier panelists also, peer pressure is a major role. So using addictive drugs, both illicit and prescribed for recreational purpose, it just starts with just fun activity, but later on it gets into your system and you get addicted to it. Seeking out intoxication every time you use. Then abusing prescription medicine. There are medicines which are prescribed by the doctors, but if you misuse those prescriptions, then also it is habit forming and it is one of the cause of substance abuse. Next, what can be done to prevent drug abuse? To prevent drug abuse, there are the top things. Understand how substance abuse develops. That we have already seen that how it starts. Then avoid temptation and peer pressure. That also my earlier speakers have told. Seek help for mental illness. Whenever you feel that you are not in a proper state of mind, you do seek help of your school counselor, or if you want, you can ask your parents also to take you to a proper counselor. Examine the risk factor. Many drugs affect your body mechanism. So what are the risk factors involved? It may give you pleasure for some time, but it can hamper your body activities for a very long time. So examine the risk factor.
and to keep a balanced life. So engage yourself in activity which does not cause you harm, or which keep your life in a balanced way. Then what are the effects on physical and psychological effects? So there are, as I said, there are long-term effects also. So drugs can lead you to drowsiness, slow breathing, while others may cause insomnia, obsession, and hallucination also. Chronic drug use is associated with cardiovascular, kidney, liver diseases. When you use marijuana, you might find it harder to focus or learn or remember things which are crucial for a learner, especially the adolescent who is studying in school or is in college. So it is affecting your cognitive state or cognitive level. This short-term effect can last up to 24 hours after you stop smoking. So marijuana smoke can inflame your lungs. You could also be more likely to get lung infection, and also seems to affect the way some people's immune system works. Then, if we talk about the effects of drugs on various bodily parts, so normal heart rate is 50 to 70%. But if you are using or if you are consuming some substance, it can rise your heartbeats by 20 or 50 beats more, up to, and the effect may last up to 3 hours after you use marijuana. Apart from this, the tar and other chemicals from your tobacco and etc., that may also raise your chance for a heart attack. So, or a stroke also. There are anxiety and paranoia are common complaints among marijuana users. Clinical anxiety and depression are also seen in majority of the cases. Then regular marijuana users often have increased appetite. They do not know that they are into binge eating, and which may lead to their weight gain and its associated problems. And certain findings have also shown that there is a loss to illness like AIDS or cancer because of the ill effects of these drugs. Then long-term marijuana can cause you vomiting. Initially, it stops nausea, but later on consumption of more of marijuana, it can cause vomiting also. There are certain problems associated with substance abuse. Signals that you may have a problem with substance abuse include lack of interest in things you used to love. You might love to watch TV, or you might love to talk with your friends. But suddenly, if you lack interest in things which you used to love, there is some problem. Then change your friends a lot as per your requirement. Like if you want to fit in some group, or want to be in that hanging with some friends, so you change your group or you change your friends a lot. You stop taking care of yourself. It's okay for you, the way you present yourself or the way you carry yourself. Then because you are under the influence of substance, so spend more time alone than you used to. If you were a social person, then suddenly if you change your likings, so there lies some problem. Either you eat more or you eat less than the normal. As I said, that either you consume more, or as my previous speaker has said, that you stop consuming regular food, or you stop eating. Again, either you eat more or you, that signifies that there lies some problem. You sleep at all hours because your body is demanding more than that means your sleep is also affected. And as sleep is one of the major bodily activity which replenish our the whole system. So you are sleeping at odd hours, that means your body proper rest. Have problems at work or with family or with your colleagues. Then you switch quickly from feeling good and bad because your emotional is also affected. So you feel either feeling good or you are feeling bad. You crave strongly or desire strongly to use a substance. So again, there are certain tips for the parents or elders to prevent teens from substance abuse. The evidences have shown parents' involvement
reduce the risk of substance abuse happen. If the parents identify that their child is having certain behavioral changes, they should feel cautious that now is the time that I should intervene. There are certain steps to prevent the teen drug abuse. That includes know your teen activity. Pay attention to your teen's whereabouts. Either he is spending more time with his friends, where is he going, is he spending more money, or establish certain rules and consequences. Know your teen friends. The friend circle plays a major role. So know your teen's friends also. Keep track of the prescription drugs. If the child is using or abusing the prescription, then also parents can check that. Provide support. I would say that provide regular support or without any condition support to your child. Set a good example. If you set yourself as a role model, he doesn't have to seek other role models. He will be a friend to him or her. Then what can be done to prevent drug abuse? There are certain top 5 ways to prevent substance abuse. Understand how substance develop, avoid temptation and peer pressure, seek help for mental illness, examine the risk Sure, you are factors. discussing about some of the most significant points, just a small information. We are left by the last 5 minutes in this session, so I would request you to please be quick. I'll conclude that. There are certain activities. That is the substance abuse and mental health services define 6 strategies in primary prevention. One is information dissemination. As I said, that information plays a very crucial role. So the more you spread the word, the better. Then education plays a crucial role. There are certain alternatives which are available, which a child can use. Then problem identification and of course reference. Community-based intervention can be there, environmental strategies can be there. Then there are certain evidence-based practices also there. Then we should come to these 5 measures of drug and alcohol abuse prevention. Understand how substance abuse begins. Substance abuse starts when someone uses any drug or alcohol for recreational purposes. This means you can suffer addiction to prescription medication, as many do too. Substance abuse also begins when you drink or to drunkenness and or use for intoxication exclusively. Of course, any abuse of prescription medication is a red big flag and risk for addiction. Avoid temptation and triggers, as again you need healthy friendship and relationship, not the toxic ones. If you need to write down some quick excuses for people and places that triggers or tempt you, please do it. Memorize your excuses and use them. Specifically protect yourself. If you know that your certain friends or group is harmful, please avoid those groups. Get the therapies you need for co-occurring conditions. Mental illness and addiction often accompany each other. Anxiety, post-traumatic stress disorder, ADHD, depression, and other mental health conditions require professional help and support. So it is that simple. You need a professional help whenever you feel that it is beyond your control to learn coping skills in the prevention of substance abuse. Get to know your risk factors. As I said, that it may give you pleasure in the early stages, but it may have long-term consequences. So do you have a family history of substance abuse, mental condition or addiction? For example, studies indicate addiction runs in the family. This is also shared by my other co-panelists, but you can prevent it. Know the risk factors for substance abuse in your life and guard against them. Maintain healthy balance in your life. So when drugs and alcohol fill the hunger brought down by the boredom, depression, and general life issues, learn and practice stress management and coping skills to keep you out of stress and balance in a healthy life. So plan, hope, and dream for substance abuse prevention. An important means of preventing substance abuse is planning, hoping, dreaming about your future. If you maintain realistic goals and if there are goals to achieve, you won't have time to fit yourself into all these illegal activities. Track your progress towards your goal so you can see even smaller accomplishments. This builds confidence, self-esteem, and positivity towards your future.
Typically, people suffering from addiction started with drugs, alcohol in low self-esteem. So for this reason, keep your eye on a specific prize in the future to prevent substance abuse in your life. Overcoming addiction, suffering addiction is not the end of life. Hopes and dreams. Instead, you have the opportunity to turn your life around. You can overcome addiction or drugs or alcohol and use substance abuse prevention skills to keep yourself on track in good health. Lastly, I would say have a safe and healthy life free of substance use. Thank you so much. Over to Simran, ma'am. Yeah, thank you so much, ma'am, for explaining it so beautifully to our viewers. Even in the paucity of time you mentioned to quickly go through the slides and explain all the important concept to our viewers. A big thanks to you. Thank you. So viewers, in this conversation we were discussing about substance abuse identification and prevention in schools. We were joined by 5 panelists. I would like to take this moment to thank all our panelists. Thank you so much, Dr. Daksha Parmar. Thank you, Dr. Nidhi Sahu. Thank you so much, Dr. Reena Singh Rajput. A vote of thanks for Dr. Avni Parashar, and thank you so much, Dr. Sonal Sharma. You all managed to put together the different aspects that are related to substance abuse, their identification and early prevention in the school. Thank you so much. Thank you to all the viewers. We would have loved to continue this session, but we had certain time constraints. Thank you for connecting with NCRT for this particular session of MANODARPAN Paricharcha. We'll have more such sessions in future, so stay connected to NCRT. Namaskar.